तो अपनी गाड़ी में रख दो कुछ 2-4, या अपने just carry it within your bag, just little pouches. So when somebody gives you a plastic bag, you say, thank you bhaiya, I have my own carry bag. That's one. Another big pollutant is plastic toothbrushes. Just think about it. All of us are told 2-3 महीने के बाद अपना प्लास्टिक टूथब्रश है ना वो बेकार हो जाता है, उसको फेंक दो. How many people are on this planet? How many are using plastic toothbrushes? All of them throw it month after month after month. Billions of plastic toothbrushes. And you know that every toothbrush you used since you were a child is still on this planet? So, मैं आपको बेच नहीं रही हूँ please, but I found this. It's a bamboo toothbrush. And I ordered it from bambooindia.com. इसके bristles भी कॉर्न स्टार्च के बने हुए हैं, totally biodegradable. मैं 6 महीने से बैम्बू टूथब्रश यूज कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे दांत बिल्कुल ठीक है. And I've made this little change, but I know it's going to go a long way. So, Bamboo India, order your toothbrushes. See, they have many other interesting things. So see, you can make a little change yourself right where you are sitting. Amazing. So, it's the little things that matter, as you said. Yeah. And I think it's really resonating with your fans. I'm going to read out 2 comments. Mukesh Sharaf is saying, पर्यावरण के लिए काफी अच्छा प्रयास कर रही हैं आप. This is the most Hindi I've ever spoken in, but I मैं think this is... तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने हिंदी में लिखा है. इनका नाम फिर से बताइए मुझे. मुकेश सराफ. मुकेश सराफ, अगर आपको मेरी बात में कोई सच्चाई लगती है तो join us. Really, just reach out to us at Citizens for Tomorrow and let's खुद सब मिलकर कुछ करते हैं. आप अपनी जगह कुछ चेंज करिए, घर में, अपने काम पे, अपनी कुछ चीज़ों के साथ, एंड राइट टू अस, लेट अस नो, ताकि हम भी इसको आगे ले चलें. लाइक यू सेइंग दीज लिटिल चेंजेस. मैंने हाल ही में, आई मीन दिस केम फ्रॉम से जमनाबाई नर्सी स्कूल. Very recently, a month ago, I received this message and all. Of course, I don't know how I landed up on their chat, but they sent it. Their school was having a drive. सब पेरेंट्स और फ्रेंड्स से कहा गया कि आपके पास अगर घर में ये कर्टन्स के मटेरियल्स हैं, सोफा के मटेरियल्स हैं, तो हमें भेज दो. क्योंकि स्कूल एनजीओ को दे रहा था to make bags out of, and then the school was going to take these bags and distribute them all across their area so that they discourage the use of plastic bags. So refreshing कि हम करें, schools करें, बच्चे करें. So we can change our world. It just takes some, lovely ideas like this. Amazing. So your message is kind of going global now. We have fans from, there's a fan called Velina from Bulgaria. And she's saying, admirations for your talent and trying to make a difference. We all know what we have to do, but change needs time and it's a little bit of education to happen. And thanks for making so many people listen. Whoa! Thank you so much. Thank you. All the way from India to कहाँ पर से आपने बताया? Bulgaria. Bulgaria. Thank you. Okay. Join us because ये सिर्फ भारत की बात नहीं है. This is really a global issue. So yeah, wherever you are, just make a change. There's a message from Shehnaz and she says, nature nurtures us. Now it's our turn to nurture the nature. Tell me her name again. मतलब अगर यहाँ पर और हाथ होते ना तो मैं शहनाज, तुम्हारे लिए मैं क्या बोलूँ यार. शहनाज, totally with you on this. Really, एक तो तुमने वो missed call दिया कि नहीं? Because this is exactly what we're trying to do. We have to nurture the rivers. We've been using them. I'm just going back to rivers because you said exactly what I'd started with was about Rally for Rivers. कि हमने अपनी भगवान ने जो दिया हमको, अपनी प्रकृति को, अपने नदियों को इतना यूज कर रहे हैं, उन्हें अब्यूज भी करते जा रहे हैं क्योंकि फ्री में मिल गया ना. थोड़ा सा प्राइस टैग लगा होता तो वी वुड हैव बीन मोर केयरफुल, बट भगवान ने ऐसे ही दे दिया. सो वी जस्ट टोटली वी आर किलिंग देम एंड इट रियली इज टाइम टू वेक अप and do something for them, for nature. So
एक starting very easy, all of you watching, just pick up your phones, give a missed call on 8009 8009 right now. Amazing. Okay. While your fans give missed calls and join the cause, the festive season is coming. Oh yeah. Festive season is coming. And we would love to know, what are your plans? How do you celebrate Ganesh Festival, Diwali? There's so many other fun little colorful things that are going to be happening around. Please. Yeah. Great. I'm even dressed for the festivities. Yes, there's Ganpati coming, then there's Navratri, फिर दशहरा, फिर दिवाली, फिर तो शादियाँ. So we have a lot of fun coming up. Let me tell you, सालों से हम गणपति तो सेलिब्रेट करते आए हैं, बट हमारे घर में आइडल नहीं आता. We do the entire puja and havan, and that's it. So, and then of course I heard about Ganpati and वो सब plaster of Paris से बनती हैं. Lately it's very nice कि किसी ने कहा नहीं, green Ganesha, start green Ganesha, मिट्टी के बनाओ, रंग भी उसमें ऑर्गेनिक यूज करो. सो इफ यू कैन, अगर आप गणपति को घर ला रहे हैं तो सच्ची उन्हें अगर प्रेम से लाना है तो आप अर्थ फ्रेंडली गणेशा लेकर आइए. या एंड चलो इसको हम फिर से प्लास्टिक से जोड़ते हैं. तो गणपति के टाइम पे विसर्जन होगा ही, तो आप सब अपने गणपति डालेंगे समंदर में. आई रेड दिस लास्ट ईयर एंड I was like, ये मुझे पता नहीं था पहले, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि they said the effects of that गणपति विसर्जन stay in the waters. मतलब जो उससे जो डैमेज होता है to the wild, to the sea life, to the water, goes on for 400 days. हमें पता नहीं चलता, हम तो वहां पर डुबा के उस दिन अगले दिन बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं. बट आपने जो समुद्र में डाला है उसके जो केमिकल्स हैं और जो उसका 400 days. So, you know what, now I'm just relating it to plastic because that's also what, the cause that I'm trying to support. कि ये सही है, एक तो मिट्टी के गणेशा बनाइए, दूसरा हम बहुत बार अपने पूजा के फूल ना प्लास्टिक में बांध के उसको डाल देते हैं सी के अंदर कि सी ले जाएगा. भाई I know we do the same at home. पूजा के फूल हम डस्टबिन में नहीं डालना चाहते, हम समुद्र में डालते हैं, बहते पानी में डालते हैं. But don't put it in a plastic bag. क्योंकि when you throw it in the plastic bag, वो 1000 साल तक बर्बादी का एक रीजन बनेगा. एक बैग आपका समुद्र में रहेगा 1000 साल तक, वो टूटता रहेगा, उसके केमिकल्स पानी में जाते रहेंगे, वो या किसी मछली के पेट में आ जाएगा या किसी के गले में फंस जाएगा. और वो बेचारा मर जाएगा, वो जो भी जीव जंतु है, मगर उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, मगर वो प्लास्टिक जो है ना वो वहीं पे रहेगा अनटिल वहां पर एक और मछली आए, फिर उसमें फंसे, फिर उसको खा जाए, फिर वो और टूटे उसके पेट में, वो बेचारी मछली मर जाए, मगर वो प्लास्टिक उधर ही रहेगा क्योंकि उससे तो 1000 साल तक रहना है. सो इट्स समथिंग, आई नो थोड़ा सीरियस मामला है, बट गणपति जी खुश हो जाएंगे, ये भी सोच लेना. So while we implement these little tips and tricks that you've given us, any messages for the fans for the festive season, going into the festive season? Going into the festive season, yes. I like what that little girl said, na? We have to nurture nature now. So while we have Diwali coming up, Dasera, जो भी त्योहार आ रहे हैं, just give it thought कि मैं क्या कर रही हूँ. पटाखे जला रही हूँ तो और धुआं कर रही हूँ, या मैं शादी के गिफ्ट्स तैयार करवा रहे हैं तो उसमें हम कितना प्लास्टिक को सेलोफेन पेपर से बांध के हम भेज रहे हैं, क्योंकि हर वो पीस प्लास्टिक का. Again, I told you, I'm sorry I keep coming back to this, but there's so much we do every day in our lives, which if we just give it a little thought, we'll change our ways. Instead, you know what? Be cooler. Be smarter than everybody else. Use silk.
use gota, use beautiful things like jute and little paper flowers or real flowers. Use those materials which are earth friendly and make a statement. Let people know that you're elevated in your thinking. So how about that? For this season, be be a higher self. I think that would be a great thing to go ahead with in life. And you know what? You will feel great about it. You will feel damn good. Amazing. Now, before we can let you go, there's a screen right in front of you. Yeah. So please take a few names, say hi to a few people, and give us like a parting message to all your fans. Ooh. And about this lovely initiative. Oh my gosh. ये इतने जल्दी रैसुल इस्लाम सुजान हाय जूही मैम हाय किधर हो यार जहाँ भी हो हाय ओके एग्जैक्टली आई शेयर्ड दिस अबाउट वेडिंग गिफ्ट्स ये किसने कहा अंशुल I made sure in my sister's wedding that plastic bags are not used. We think the same. Thank you Anshul. Wow. Yash Sharma काफी लंबा लिखा उन्होंने. Before it disappears. Hi ma'am. Indore. The mayor banned the plastic. Whoa. Which has reduced daily garbage of plastic from 125 tons to 45 tons daily garbage. That's amazing. Great, yeah. Thank you for giving me this news क्योंकि अब now I'll use it. I will use this in my presentations. के देखा वहाँ पर भी ऐसा हो रहा है. ये मेरे को पता नहीं था वैसे. Thank you. बाकी ने hi Juhi hey किया है सब. Habib. from Pakistan. Hey, अरे वाह. पाकिस्तान में मेरी भी फैमिली है. कराची में. आप कहाँ हो? But anyway, to all of you, क्या बोलूं? आदाब. Assalamu alaikum. Okay. And there's this one question that keeps popping up: when are we seeing you next on screen? Because if we don't ask you that, then it's going to be a no. ये तो देखो वो मेरा पहला काम है. तो मैं घूम फिर के फिल्में तो करती हूँ. But I wait for that one lovely, something nice to come my way, and that has come my way. I would like to make the announcement already, but announcement production house की तरफ से आनी चाहिए, तो I have to also keep quiet. But very soon we will be shooting in December, Jan, February for this lovely film, and so next year I'll be doing a nice film. I'm part of a very nice film, and I have a lovely role. So आ जाऊंगी भाई. मैं भी कहाँ जाऊँ. Well, thank you so much, Juhi. Okay. It has been lovely talking to you, and what a great initiative! What a great voice to have for a cause like this. And we just hope that the message reaches to everyone, and everyone follows your lead. And I want to thank you also, Facebook, for giving me this opportunity. क्योंकि जैसा आपने कहा, here I am talking to people. You're hearing this from me. It's not a script anywhere. It's you, me chatting, and I hope we have an exchange somewhere. So thank you, Facebook, for giving me this platform. Thank you so much for having such a great message. Bye-bye to all the fans. Okay, bye-bye. See you again.